Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start factors and multiplies. So now we will start exercise 5.5 question number C. Question number A and question number B we had done in the last class. But before starting our exercise, first we will see what you had learned in the last classes. So what you had learned in the last classes, first you had learned multiplies, then property of multiplies. How many property of multiplies? 5 property of multiplies. Then after odd and even number. A number which is multiple of 2 is called even number. A number which not multiple of 2 is called odd number. Then factor. What is the factor? A factor of number divide the number without leaving a remainder. जिसका रिमाइंडर क्या रहता है? 0 रहता है, उसको हम बोलते हैं factors. Then next is the factor tree. This is the diagram of factor tree. Then prime number and composite number. What is the prime number and what is the composite number? A number which have only 2 factor. Number which have only 2 factor, 1 and the number itself are called prime number. प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसके क्या है? 2 फैक्टर्स है. कौन से 2 फैक्टर्स? 1 एंड नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल 11, 13, 17 and 19. These have only 2 factors, 1 and itself numbers. Then composite number. Number which have more than 2 factors are called composite number. ऐसा नंबर जिसके क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20. दीज आर द कंपोजिट नंबर. देन आफ्टर प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स. सो हाउ मेनी प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स? 4 प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स. देन ट्विंस प्राइम नंबर. विच इज द ट्विंस प्राइम नंबर? 2 प्राइम नंबर विच डिफरेंट 2. 2 प्राइम नंबर का डिफरेंट क्या रहता है? 2 रहता है, उसको बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर. देन नेक्स्ट इज द कॉमन फैक्टर. व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? सपोज वी आर टेकिंग 2 नंबर एंड देन आफ्टर वी आर टेक आउट द फैक्टर्स, देन वी विल गेट कॉमन नंबर. दिस इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर. सपोज हमने क्या लिए है? 2 नंबर लिए है कोई भी. फॉर एग्जाम्पल 12 और 15. 12 और 15 के बीच में कॉमन क्या है? 1 एंड 3. सो दिस इज द कॉमन फैक्टर्स. ओके. देन नेक्स्ट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं? जो फैक्टर कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो क्या है? बिग नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल नाउ हियर 1 एंड 3 इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 50. 12 और 15 में से कॉमन क्या है? यहाँ पे 1 और 3 है. सो इसमें से बड़ा क्या है? 1 और 3 में से 3. सो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या लिखते हैं? HCF. HCF. Highest common factor is normally written at HCF. It is also known as greatest common divisor GCD. उसको क्या बोलते हैं? GCD. Next is the co-prime number. 2 number which have only 1 as a common factor are called co-prime number. जो नंबर क्या है? उस 2 नंबर लेने के बाद उसका जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या है? सिर्फ 1 नंबर है, 1 ही है, उसको हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल 15 और 16. 15 और 16 के फैक्टर निकालने के बाद उसमें कॉमन क्या है? ओनली 1 इज कॉमन. सो 15 and 16 is the co-prime number. So now
We will start exercise 5.5 question number C. What is the question number C? Find the HCF. हमें क्या निकालना है? HCF. HCF means highest common factor. क्या होता है? Highest common factor. Now we will start question number 1. Question number 1 is the 3 and 5, 15. The factors of 3 are 3 के factors क्या है? 1 and 3. 3 is the prime number, इसलिए उसके दो ही factors है, 1 और 3 है. The factors of 15 are 15 के factors क्या है? 1, 3, 5 and 15. 1, 3, 5 and 15. Now which is the number is common? 1 and 3. This is the common. The common factors are 1 and 3. इसमें से common क्या है? 1 और 3 है. So what is the SCF? SCF क्या है? SCF of 3 and 15 is, इसमें से SCF क्या है? 3 है. Now example number 2. 12 and 18. क्या है? 12 and 18. The factors of 12 are. फैक्टर क्या है 12 के? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. This is the factors of 12. The factors of 18 are. 18 के क्या फैक्टर्स है? 1, 2, 3, 6, 9 and 18. This is the factors of 18. Now which is the common? 1 is common, 2 is common, 3 also common, 4 no, 6 also common, 9 no, 12 is common no, 18 is also common no. So the common factors are, common क्या है इसमें से? 1, 2, 3 और 6 क्या है? common है. So SCF of 12 and 18 is क्या हो सकता है इसमें से? SCF is the 6 number. Now question number 3. 16 and 36. क्या है? 16 and 36. So what is the factors of 16? 1, 2, 4, 8 and 16. This is the factors of 16. Now factors of 36. 36 के factors क्या है? 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18 and 36. This is the factors of 36. Now we want common. 1 is common, 2 is common, 4 is common, 3 is common no, 8 no, 9 no, 16 no, 12 no, 18 no, 36 no. So what is the common? 1, 2 and 4. This is the common. And what is the SCF? 4 is the SCF. 4 is highest number. Now example number 4. 10, 20. 10 and 20. The factors of 10 are. 10 के क्या क्या factors है? 1, 2, 5 and 10. This is the factors of 10. The factors of 20 are. 20 के कौन से factors है? 1, 2, 4, 5, 10 and 20. This is the factors of 20. Now which is the common number? 1, 2, 5, 4 is common no, 10 yes, 20 no. So what is the common factor? 1, 2, 5 and 10. This is the common factor. Now SCF of 10 and 20 is 10. क्या है इसमें से? SCF 10 है. Now from example number 5, 6, 7, 8, 9. This is the similar. ये क्या है? Similar है. From example number 1 to 4, 5 की तरह ये common है. ठीक है. So this is the homework from example number 5 to 9. This is homework. Now example number 10, 11, 12 and 13 I will explain. Then example number 14 and 15 also homework.
तो आपको होमवर्क क्या क्या है, 5 नंबर 6 7 8 9 देन 14 and 15. This is the homework. Now I will start example number 10. So look at in example number 10. What is the example number 10? 12 and 112. So now we want common factors. So 42 common factors. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 and 42. This is the common factors of 42. Now common factors of 112. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56 and 112. This is the factors of 112. Now we want a common factor. So what is the common factors? 1 is common, 2 is the common, 3 is common, no. 4 is common, no. 6 is common, no. 7 is common, yes. 8 is common, no. 14 is common, yes. 21, no. 42, no. 16, no. 28, no. 56, no. And 112, these also not common. So common क्या है इसमें से 1, 2, 7 and 40. So इसमें से highest क्या है 14 is the highest common factors. Now example number 11. What is the example number 11? 12, 32 and 36. यहाँ पे अभी कितने नंबर है 3 नंबर्स है. The common factors of 12. 12 के कॉमन क्या है 1, 2, 3, 4, 6 and 12. This is the common factors of 12. Now the common factors of 32. 32 के क्या कॉमन है 1, 2, 4, 8, 16 and 32. This is the common factors of 32. Now what is the common factors of 36? 36 के क्या कॉमन फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. This is the common factors of 36. Now we want common factors. Okay, अभी हमें common factors निकालना है तीनों में से. 1 है तीनों में, yes. 2 है, yes. 3 है, no. Okay. 4, yes. 4 also have a in 3. 8 है क्या नहीं. 3 also not. 6 नहीं. 12 no. 16 no. 9 no. 32 no. 12 दोनों में है सिर्फ. 18 no. 36 no. So what is the common factor? 1, 2 and 4. तीनों नंबर में क्या कॉमन है 1, 2 and 4. So what is the SCF of 12, 32 and 36? 4 is the SCF. Now example number 12. What is the example number 12? 16, 24 and 40. The factors of 16 are 16 के क्या factors है 1, 2, 4, 8 and 16. This is the factors of 16. Now factors of 24. 24 के कौन से factors है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. This is the factors of 24. Now we want the factors of 40. 40 के कौन से factors है 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 and 40. This is the factors of 40. Now we will take out the common factor. Common क्या है तीनों में 1 common है yes. 2 is common yes. 4 is common yes. 3 है क्या common नहीं है. 8 yes. 8 also common. 6 है क्या no. 5 no. 16 no. 12 no. 24 no. 10 20 और 40. These also not common. So इसमें common क्या है 1, 2, 4 और 8 क्या है इसमें common है. So what is the SCF of 16, 24 and 40? The SCF of 16, 24 and 40 is 8. इसमें से SCF क्या है 8 है.
Now example number 13. 24, 36 and 40. So what is the common factors of 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. This is the common factors. This is the factors of 24. The factors of 36. 36 के factors क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. ये क्या है? 36 के factors है. Now factors of 40. 40 के क्या क्या factors है? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 and 40. This is the factors of 40. Now we want the common factor. अभी हमें एक common factor निकालना है. 1 is present. Yes. 2. Yes. 3 नहीं है. 3 2 इसमें है, इसमें नहीं है. 4 yes 4 इसमें है. 6 दोनों में है, इसमें नहीं है. 5 है क्या? नहीं. 8 दोनों में है, इसमें नहीं है. 9 also not. 12 दोनों में है, इसमें नहीं है. 10 है क्या? नहीं. 18 also not. 20 no. 24 है नहीं. 36 नहीं. 40 no. So what is the common factor? 1, 2 and 4. And what is the SCF? SCF of 24, 36 and 40 is 4. क्या है इसका SCF? 4 है. I hope all of you nicely understood. So what is the homework? You have homework. Example number 6, 7, 8, 9. Which is the homework? 5, 6, 7, 8, 9. Then 14 and 15. This is the homework. This is write in your notebook. Thank you and have a nice day.